Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. Welcome back to grammar class. In our today's grammar class, we are going to study a new chapter. We will start chapter 2, kinds of sentences. Now, in the previous chapter, we studied what is sentence. Yes, sentence means group of words that make complete sense, that are meaningful and sensible. Okay, so today we are going to study kinds of sentences, यानी कि अलग-अलग टाइप के sentences. Every sentence conveys us meaning, but the nature of the sentence is different. So we will study kinds of sentence. The first type is assertive sentence. Assertive sentence is also known as declarative sentence because it declares something, right? तो ऐसा सेंटेंस जो आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, कुछ डिक्लेयर कर रहा है, तो वो सेंटेंस है assertive sentence. Now second is imperative sentence. Now what is the meaning of imperative? Imperative sentence can be a command, a request or an advice. Now the third type is interrogative sentence. Sentence that asks question is called interrogative sentence. Example, before a minute I asked you, how are you? So that is a question and it comes under interrogative sentence, right? तो क्वेश्चंस जो भी होते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं. Now the fourth type is exclamatory sentence. What is exclamatory sentence? A sentence having exclamation mark at the end. Okay, a sentence that expresses sudden feeling. The feeling can be of sadness, of happiness, of anger, of excitement, etc. So sentence that expresses sudden feeling is exclamatory sentence. Now the fifth type is optative sentence. What is optative sentence? Optative sentence it means a wish. Okay, that conveys a wish. For an example, may God bless you all. That is my wish for you all, right? So that conveys a wish, and that is optative sentence. So 5 kinds of sentences here. Okay, assertive, imperative, interrogative, exclamatory and optative. Now we will study this further. Read the sentences given below. Sentence number 1. How much was the movie ticket for? How much means it is question word. How is a question word, and you can also see the question mark behind this sentence. Okay, this sentence is asking a question. So tell me which kind of sentence it is. It is interrogative sentence. The sentence which asks question is called interrogative sentence. Second, the sun rises in the morning. The sun rises in the morning. That is a fact. Okay, that is a fact. It is truth, universal truth, which is not going to change. It's not gonna change. So this is a statement and it is universal truth. So this is assertive sentence. Please lend me some money means here a person is asking for money. Okay, and the word please is added means he is requesting to lend the money. Please lend me some money. Please suggest, the word please suggest request. So this is, yes, which kind of sentence it is? It is imperative sentence. Look right and left before crossing the road. Look right and left before crossing the road. Here it is advice. Okay, we everyone knows what is the meaning of advice, right? Advice yani salah. Okay, it is an advice कि you should walk
and cross the road, but before crossing the road you have to look left and right. So this is advice, and it also comes under imperative sentence. Okay, sentence number 5. Shut the door. Shut the door. This is command. Okay, this sentence expresses command. So this is also imperative sentence. What are you looking for? What are you looking for? आप क्या ढूंढ रहे हो, क्या खोज रहे हो? This is question. Okay. And you can see question mark is also there. So this is interrogative sentence. How expensive the jewelry is? How expensive the jewelry is? This is exclamatory sentence because it expresses the strong feeling के ज्वेलरी तो देखो कितनी महंगी है. ओके, ज्वेलरी इज वेरी एक्सपेंसिव. सो दिस इज exclamatory sentence, and as you know that exclamatory sentence has exclamation mark. Okay, you can see exclamation mark, exclamatory mark. May God bless you. This kind of sentence is expressing wish. Okay, this sentence is expressing wish. Okay, may God bless you. The words like may, would, etc. are used to express wish. So this is optative sentence. The sentence which expresses wish or prayers are called optative sentences. Words like may and would are there in the sentence. Okay, I hope you are clear. Let's revise. First sentence is question. Okay, so it is interrogative sentence. Second is universal truth and a statement, so it is assertive sentence. Third is request. Please word is used in this, so it is imperative. Fourth is look right and left before crossing the road. It is advice, so it is also imperative sentence. Shut the door. It is command, so it is also imperative sentence. Means imperative sentence expresses a command, request और an advice. तीनों हम देख सकते हैं कि तीनों एग्जाम्पल्स में आपको ऐसा भी दिखेगा कि रिक्वेस्ट भी किया है, एडवाइस भी दिया है और कमांड भी दिया है. सो दिस 3 things falls under the category of imperative sentences. Now 7th sentence, 6th sentence is also interrogative. 7th sentence expresses the strong feeling. Okay, how expensive the jewelry is. Okay, this expresses the strong feeling. Now children, strong feeling may be of joy, surprise, sorrow, sadness or anything. Okay, it can be any feeling. So strong feelings are expressed by exclamatory sentence, and exclamatory mark is also there in this kind of sentences. Number 8 is optative sentence. Optative sentence expresses wishes. Okay students, take out page number 12 of your grammar textbook. We will study chapter 2, kinds of sentences, from your textbook. Let's begin. Study the following sentences. I go to school every day. Keep silence. Who is knocking? How beautiful the rainbow is. I wish I were a king. Okay, so
all the above sentences are different in nature. The first sentence declares something. It states something, right? It is the habit. It is the habit. I go to school every day. So it is declarative sentence. The second one is a command. So it is imperative sentence. The third one is question because it asks a question. So it is interrogative sentence. The fourth one expresses a feeling. Okay, feeling of amazement, right? So it is exclamatory sentence. The fifth one is expressing a wish, option. So it is optative sentence. Now we will read the chapter further. Okay, the first type, assertive or declarative sentence. All those sentences that make a statement that states something or assert something और डिक्लेयर समथिंग, ठीक है, कुछ स्टेट कर रहे हैं, वो कुछ बता रहे हैं, ओके, देन दैट इज असर्टिव सेंटेंस. या कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं, इफ दे आर अनाउंसिंग समथिंग, देन इट इज असर्टिव सेंटेंस. It can be positive also and it can be negative also. Suppose if I say that there is no exam today, so that is a negative sentence because it is having word no. So words like no, not, cannot, could not, okay, having not, have not, did not, etc. are negative sentence. So sentence, assertive sentence can be positive or negative. Assertive sentence always ends up with a full stop, यानी जब सेंटेंस खत्म होता है वो assertive, तो उसके पीछे full stop लगता है. ओके, there are 3 kinds of assertive और declarative सेंटेंस. 3 टाइप्स है. कौन कौन से हैं? पॉजिटिव है, नेगेटिव है और एम्फेथेटिक है. ओके, एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव. एग्जाम्पल है ही इज एन ऑनेस्ट मैन, पॉजिटिव. नेगेटिव में है ही इज नॉट एन ऑनेस्ट मैन, ही इज श्योरली एन ऑनेस्ट मैन. आई एम इंटरेस्टेड इन फिल्म्स, I am not interested in films. I am surely interested in films. He is my good friend. He is not my good friend. He is indeed my good friend. Okay. So 3 types of assertive sentence. The sentence can be formed by using the structure subject, verb plus other words. Here subject is he, verb is and other words my good friend. Okay, for example, the lamb followed Mary everywhere. So here the lamb is the subject, followed is verb and Mary everywhere is other words, and it is a positive sentence. The lamb did not follow Mary everywhere, that is negative. The lamb did follow Mary everywhere, that is emphatic sentence. They like to play basketball, positive. They do not like to play basketball, negative. Now children, did you notice something about emphatic sentence? Yes, emphatic sentences are that sentences that shows some strong feeling, okay, that are very clear and very strong. Here you can see the word like surely,
राइट, आप देख सकते हो श्योरली है, इंडीड है, राइट. सो ऑल दिस वर्ड्स definitely are very strong and powerful, means the speaker of this sentence is very firm about things. So the sentence is very clear, very powerful and very strong. So this kind of sentences are emphatic sentence. Okay, so now we will start the second type of sentence, imperative sentences. You already know that an imperative sentence tells us about a command, order or request or advice or suggestion. Okay, तो अगर कोई सेंटेंस में कमांड है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, सजेशन है, सो इट इज़ imperative sentence. The structure of imperative sentence is verb plus object or verb plus adverb or preposition. verb के बाद लगता है उसमें object या verb के बाद लगता है adverb और preposition. The subject you has to be taken for granted. यहाँ पर you है वो आपको subject में मान ही लेना है. जैसे कि मैं बोलूँ सिट डाउन, तो आपको समझ जाना है कि मेरे साथ ही कन्वर्सेशन हो रही है, यानी द सब्जेक्ट इज यू एंड दैट वी हैव टू बी टेकन, दैट वी हैव टू टेक ग्रांटेड. ओके, एज इट डज नॉट मेंशन in sentence, it is not mentioned in sentence. You sit down, you come here, ऐसा नहीं बोलते हैं. सीधा जिससे बात कर रहे हो तब उसको बोल ही देते हैं ना, sit down. So you is taken for granted, it is to be understood. All imperative sentences end up with full stop. तो assertive और imperative दोनों टाइप के sentences में full stop ही लगता है. Okay, for example, be quiet. This is positive command. Don't be quiet. That is negative command. Please do be quiet. That is emphatic command. Please give me some milk. That is positive request. Please don't give me some milk. That is negative request. Please do give me some milk. That is emphatic request. Get out. That is order. Respect your elders. That is advice. Revise your lesson. That is suggestion. Right? So suggestion also is imperative sentence. I hope you understood. Now the third type of sentence, interrogative sentence. All those sentences that are used to ask question are called interrogative. जो भी सेंटेंस क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. सच सेंटेंसेस ऑलवेज एंड अप विथ क्वेश्चन मार्क. उस सेंटेंस के पीछे हमेशा क्वेश्चन मार्क ही होगा. ओके, जिसमें भी क्वेश्चन होगा उसमें क्वेश्चन मार्क होगा. नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैन बी ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स. वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं. देर आर सम sentences that can be framed for asking question of various kinds. These sentences start with helping verb that can be either auxiliary or modal verbs, such as for the present tense we use do, does, is, am, are, has, have. ठीक है, तो ये सेंटेंस जो है वो हेल्पिंग वर्ब या तो ऑक्सिलरी से शुरू होता है. फॉर एन एग्जाम्पल, आर यू फाइन. ओके, वी आर आस्किंग ना, आर यू फाइन. वी यूज डू यू वॉन्ट इट. ओके, सो ऐसे सारे सेंटेंस है वो डू, डज, इज, आर, एम, हैज, हैव एक्सेट्रा से
बनते हैं, प्रेजेंट में हो तो। अगर पास्ट में है तो हम यूज़ करते हैं, वी यूज़ डिड, वॉस, वर, हैड। ओके, वॉज द मीटिंग इम्पॉर्टेंट, ऐसा मैंने पूछा, सो दैट इज पास्ट टेंस, राइट? क्वेश्चन अबाउट पास्ट. नाउ फ्यूचर टेंस. We use words like, words means we use helping verbs like will, shall, can, could, need, ought. Okay, so will you come to my house at evening? That is a question mark of future tense, right? So we are using will. So ये सारे auxiliary यूज़ करते हैं जब हमें फ्यूचर का बोलना होता है, फ्यूचर के लिए पूछना होता है. Some questions are answered only by saying yes or no. सिर्फ yes और no बोलने से भी काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर हो जाते हैं. Like, have you done your homework? Yes, no. ठीक है, कोई भी एक रिप्लाई होगा. So यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं. For example, will you help me in solving these sums? Will you not help me in solving these sums? ये दो टाइप के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. जैसे कि मैंने आपको कहा था, जिसमें भी वर्ड्स नॉट, नेवर, डिड नॉट, कैन नॉट, ठीक है, ऐसा सब कुछ आता है, वो नेगेटिव होते हैं. आर यू कमिंग टू द पिकनिक? दैट इज पॉजिटिव क्वेश्चन. And that is present tense question. Okay, will you help me in solving these sums? That is future tense. Now, are you not coming to the picnic? That is also negative sentence, but in the present tense, right? Questions asked by using WH words or how. There are some questions that begin with the help of WH words. ठीक है, जैसे कि when, how, which, whom, whose. Okay, those words, those WH words are why, what, when, who, whose, whom, which, where, how, etc. और ये वर्ड्स हम लोग अपने डेली लाइफ में, रूटीन में यूज़ करते ही हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, वाई आर यू लेट, वॉट डू यू वॉन्ट, व्हेन आर यू गोइंग टू सबमिट द होमवर्क, हु आर यू, हुज बुक इज दिस, whom do you want to meet, which color is this, where are you going, how are you, etc. Turn the page. These questions cannot be answered with yes or no as they need a complete answers. ठीक है, कोई कोई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका आंसर सिर्फ yes या no में नहीं होता है, उसको हमें प्रॉपर आंसर उसका देना पड़ता है. जैसे कि यहाँ पर दिया है, विच सब्जेक्ट्स आर यू ऑप्टिंग फॉर, तो आपको सब्जेक्ट्स के नाम बताने पड़ेंगे. विच डॉक्टर डिड यू गो फॉर योर ट्रीटमेंट, मीन्स यू हैव टू से द नेम ऑफ डॉक्टर, यू हैव टू आंसर. ओके, हाउ इज़ योर ग्रैंडफादर फीलिंग नाउ, तो आप येस या नो तो नहीं बोल सकते, यू हैव टू आंसर दैट माई ग्रैंडफादर इज़ फीलिंग बेटर नाउ. ओके, सो ये पूरा एक सेंटेंस है, इसका रिप्लाई. ओके, हु इज़ प्लेइंग विथ द डॉग, तो जो भी पर्सन खेल रहा है उसका नाम आप बताओगे. व्हेन विल वी बोर्ड द प्लेन, सो यू हैव टू से द डेट एंड टाइम. ओके, यू हैव टू स्पेसिफाई द टाइम. सो दिस आंसर्स यू विल गिव इन मोर देन येस और नो. ओके, तो इस क्वेश्चंस के जवाब आप स्पेसिफिक या प्रॉपर आपको आंसर देने पड़ेंगे. नाउ अल्टरनेटिव क्वेश्चंस.
In some case, an interrogative sentence can have more than one questions in one sentence. They are joining by or. ओके, तो दो सवाल हो सकते हैं पर बीच में और हो सकता है. लाइक एग्जाम्पल, विल ही बी रीडिंग अ कॉमिक और वॉचिंग कार्टून ऑन टीवी. तो यहाँ पर दो ऑप्शंस दिए हैं बेसिकली और बीच में और पूछा है कि वो क्या कर रहा होगा, बुक रीड कर रहा होगा या तो फिर कार्टून देख रहा होगा. सो देयर इज ऑप्शन एंड देयर आर टू क्वेश्चंस. विल ही बी रीडिंग अ कॉमिक or watching cartoon on TV? In this type of question, one of the answers is always positive and other is negative. तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना आंसर में, yes he might be watching cartoon on TV, he might not be reading a comic. तो कोई भी एक ही पॉजिटिव होगा. ओके, in this type of question one of the answer is always positive and other is always negative. Now question tags. Question tags are those short questions that are added to a statement. एक statement दी है और उसके बाजू में हमें क्वेश्चन वाला टैग लगाना है. तो शॉर्ट क्वेश्चन हमें लगाना है for asking either agreement or confirmation. For example, a peacock is beautiful bird, isn't it? Means we feel it that peacock is beautiful bird, but we are asking for agreement. हम चाहते हैं कि हम जिसको पूछ रहे हैं वो भी ये चीज़ पे अग्री हो, इसीलिए this type of question tags ask for agreement or confirmation. My mother is cooking for us, isn't she? यहाँ पर confirmation के लिए है. ओके, कंफर्म करना है कि मदर है वो खाना बना रही है ना हमारे लिए. दैट इज confirmation, asking for confirmation. and this is question tag. question tag क्या है? isn't it, isn't she, ये क्वेश्चन टैग्स है. ओके, नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ सच काइंड ऑफ सेंटेंस इज ऑक्सिलरी वर्ब और WH वर्ड. ओके, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर. Okay, the fourth type of sentence is exclamatory sentence. You already know that exclamatory sentence expresses strong emotion, okay, or feeling. The feeling can be of surprise, pain, admiration, sorrow, excitement, etc. Such sentences always end up with a sign of exclamation. ओके, एक्सक्लामेशन की साइन होती है हमेशा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, तो वो एक्सक्लामेशन की साइन है ऐसी. ओके, ऐसी साइन है. नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ सच सेंटेंसेस इज WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सब्जेक्ट क्या है? इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन यानी ऐसे वर्ड्स जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं. ओके, प्लस WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. हियर वी विल टेक एग्जाम्पल. फर्स्ट, हुर्रे आवर टीम हैज वॉन द मैच. तो हुर्रे है वो इंटरजेक्शन है. ओके, फिर आवर टीम दैट इज सब्जेक्ट, हैज वॉन दैट इज वर्ब, द मैच दैट इज ऑब्जेक्ट. हैज इज हेल्पिंग वर्ब एंड वॉन इज द मेन वर्ब. द मैच इज द ऑब्जेक्ट. ओके, अल्लास इज इंटरजेक्शन expressing sadness. Our team lost the match. Wow. Interjection
वॉट, दैट इज वॉट, WH वर्ड, राइट. कभी कभी आएगा, कभी कभी नहीं भी आएगा. सो वॉट, और टॉल बिल्डिंग, तो सीधा आपको क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया है ना इसमें. आउच, माई आर्म इज हर्टिंग. सो हियर आउच इज शोइंग sudden feeling. My arm is subject. Is the helping verb. Hurting is the verb. Okay. Okay, the fifth type of the sentence, fifth kind of sentence is optative sentence. All those sentences that express a wish or a prayer is known as optative sentence. कोई भी ऐसा सेंटेंस जो हमारे विश को एक्सप्रेस करता है, दैट विश कैन बी फॉर आवर सेल्व्स ऑल्सो, फॉर अदर्स. ओके, वो खुद हमारे लिए विश हो सकती है, खुद के लिए, या तो किसी और के लिए भी हो सकती है. फिर वो कोई प्रेयर भी हो सकती है. ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, मे आवर किंग लिव लॉन्ग. दिस इज अ प्रेयर. ओके, that prayer is for king. Okay, so this kind of sentence expresses our wishes, our prayers for others or for ourselves. Okay, so here, would that I were an emperor. Here it expresses a wish. Okay, would that I were a emperor. राजा बनने की विश है. ठीक है, कि काश मैं राजा बनूं. ओके, सो दिस इज अ विश. ओके चिल्ड्रन, रिमेंबर ऑल ऑप्टेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विथ अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. ओके, यहाँ पर भी एक्सक्लेमेटरी साइन लगेगी. ओके, नाउ यू हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइज. ओके, यू हैव टू राइट काइंड ऑफ सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस. आपको एक सेंटेंस दिया है और उसके सामने आपको उसका टाइप लिखना है. द फर्स्ट वन इज डन. व्हाट अ स्वीट वॉइस द कोयल हैज़. ओके, कोयल की कितनी अच्छी आवाज़ है. सो हियर इट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. मे आवर किंग लिव लॉन्ग. दैट इज द प्रेयर, दैट इज आवर विश फॉर द किंग. सो दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस. ओके, सो हियर यू हैव टू solve this exercise. Here in the second exercise you have to put the proper punctuation, the right punctuation mark at the right place. How brave those soldiers are. Okay, so this is an exclamatory sentence. Okay, so it will have exclamatory mark. Now the second one is, why were you late yesterday. Now this is a question, so we will add question mark, right. तो ऐसे आपको ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है. ओके, I hope children you understood kinds of sentences. Now you have to solve the exercise and read the chapter. आपको चैप्टर रीड करना है और उसके रिलेटेड जो PDF की एक्सरसाइज है वो आपको सॉल्व करनी है. सो डू योर होमवर्क. ओके चिल्ड्रन, बाय, टेक केयर.